we learned the basic concepts of differentiation, means how to find derivatives of addition, subtraction, product and quotient. Now again we find the derivatives of simple functions, sin x, cos x, tan x, e to the power x, a to the power x, etc. But how about the functions like sin of root x, cos of 1 upon x? All these functions are called composite functions, and in this section we learn how to differentiate these composite functions. First, we learn what is meant by differential function. When we say that u is a differential function of x, when we say that u is a differential function of x, it means limit del x tends to 0, del u by del x equals to du by dx. Simply, where del x is the small increment in x, whereas del u is the small increment in u. So listen to this step, that limit del x tends to 0, del u by del x equals to du by dx. When we say that u is differentiable function of x. Likewise, when we say that y is differential function of u, y is a differential function of u. Listen carefully. Here y is differential function of u. Then limit del u tends to 0, del y by del u dy by. So this is the differential. Now we have to prove this theorem, derivative of composite function. The statement is, if y equals to f of u is differential function of u and u equals to f of x differential function of x, then dy by dx equals to dy by du into du by dx. This is the composite theorem on composite function. So let's start with small increment del x. So let therefore corresponding increments in y and u respectively, as del x tends to 0. अब यदि del x की वैल्यू 0 के नजदीक जाएगी तो या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं as del x not equals to 0. यदि वो स्मॉल इंक्रीमेंट है तो ऑब्वियसली del x का वैल्यू 0 नहीं रहेगा. सिमिलरली del y का भी वैल्यू 0 नहीं रहेगा और del u का भी वैल्यू 0 नहीं रहेगा. यहाँ तक हमने हमारा ये स्टार्टिंग का एक्सप्लेनेशन लिख लिया. नेक्स्ट क्या करना है, तो ये थ्योरम में से ही हमको स्टेटमेंट उठाना है. ना del y by del x, इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे. वी कैन राइट दिस del y by del x रेशियो एज del y by del u into del u by del x. इस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं. एडजस्टमेंट
नया हमने कुछ भी नहीं किए, सिर्फ इसको अरेंज किए। यहाँ पर हमने डेल वाई बाय डेल यू, यहाँ पर हमने डेल यू ये टर्म ज़्यादा का लिए तो उसको हमने न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दिया बस। अब क्या करना है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देना है, टेकिंग लिमिट as del x tends to 0 on both sides. Therefore, limit del x tends to 0, del y by del x equals to limit del x tends to 0, del y by del u into del u by del x. अभी हमने दोनों तरफ सिर्फ लिमिट अप्लाई की। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये लिमिट सेपरेट कर देना है। ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल यू इनटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। Now in statement we are given that u is differential function of x. Here u is differential function of x. So value of this limit will del u by del x, but here as y is differential function of u, the limit should be del u tends to 0. तो अब हमको ये del u del x चेंज करके यहाँ पर del u लिखना है। Therefore limit del x tends to 0 del y by del x equals to लिमिट डेल एक्स, यहाँ पर हमको डेल एक्स चाहिए, डेल यू चाहिए तो डेल हम ले सकते हैं डेल यू टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल यू इनटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ रिजल्ट लिखेंगे हम सिंस डेल यू टेंड्स टू 0, सिंस डेल एक्स टेंड्स टू 0 implies del u tends to 0। अब यदि del x की वैल्यू 0 हो रही है तो del u की वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ पर भी del x निकाल कर हम del u लिख सकते हैं। अब स्टेटमेंट में हमको दिया है कि y is differential function of x and u is differential function of y is differential function of u and u is differential function of x। Y is differential function of u and u is a differential function of x. Therefore, limit del x tends to 0 del u by del x equals to du by dx and limit del u tends to 0 del y by del u equals to dy by du। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको जब हम एक नंबर लिखेंगे, इसका वैल्यू हो गया डी यू बाई डी एक्स, इस लिमिट का वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी यू। अब जब राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट है तो सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड का भी लिमिट एग्जिस्ट रहेगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। एंड लिमिट ऑन RHS exist, limit on LHS of 1 also exists and is equal to dy by dx. Therefore dy by dx equals to राइट हैंड साइड का लिमिट हो जाए डी वाई बाई डी एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स।
This theorem is also known as chain rule. In 11th standard, we learned the derivatives of basic functions like sin x, x to the power n, 1 upon x, 1 upon x to the power n. Now we are to learn the derivatives of composite functions. So ddx of f of x to the power n, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, f of x मीन्स कोई भी फंक्शन है x का, तो उसको पावर यदि है तो यहाँ पर भी x टू द पावर n का फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ddx of f of x to the power n into f of x to the power n minus 1. फिर से हमको डेरिवेटिव का लेना है f of x का, और f of x का डेरिवेटिव आ गया f dash of x. तो इस तरह से हमको डेरिवेटिव करना है f of x to the power n. नेक्स्ट सेम डेरिवेटिव है ddx of 1 upon f of x to the power n. तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस m into f dash of x upon f of x to the power n plus 1. तो यहाँ पर f of x को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जिस तरह से हमने 11 में सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए, उसी तरह से डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करना है. वहाँ पर सिर्फ x था, तो यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन रहेगा, जैसे sin x, tan x. रूल वही रूल्स हमको अप्लाई करना है जो रूल्स हम 11 में अप्लाई किए. तो यहाँ पर जैसे थर्ड रूल रूट x का रूट ऑफ f of x का डेरिवेटिव आएगा रूट f of x का डेरिवेटिव आएगा 1 upon 2 रूट f of x into f dash of x मीन्स f dash of x हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं. इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव ddx ऑफ समझो साइन ऑफ f of x ट्रिग्नोमेट्रिक में कंपोजिट फंक्शन यदि अगर है तो इसका डेरिवेटिव आएगा साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ f of x. फिर से हमको डेरिवेटिव का लेना है f of x का. f of x का डेरिवेटिव हो गया f dash of x into f dash of x. ये इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको अप्लाई करना है. नेक्स्ट ddx ऑफ कंसीडर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर f of x. इसको जब हम कंपोजिट फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे तो a टू द पावर f of x into log a into फिर से f of x का डेरिवेटिव लेंगे हम f of x का डेरिवेटिव f dash of x. एंड 6 ddx of log of f of x. log of f of x का डेरिवेटिव हमको लेना है, तो ये हम लेंगे 1 upon log of f of x. log of f of x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो log का डेरिवेटिव 1 upon हमने ये लिया 1 upon f of x. फिर से डेरिवेटिव लेना हमको f of x का, तो f of x का डेरिवेटिव आ गया f dash of x जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे f dash of x upon f of x. तो इस तरह से ये कुछ बेसिक फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव हमने लर्न किए. अब इन पर प्रॉब्लम्स किस तरह से रहेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट प्रॉब्लम है साइन ऑफ log x. हमको ये फंक्शन दिया है साइन ऑफ log x और इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसको हम y ले लेंगे. सॉल्यूशन लेट y equals to sine of log x. Now differentiate this function with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore dy by dx equals to derivative of sine is cos. Means ये आ गया cos of log x. अब फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है log x को dx of log x. तो dy by dx हमारा बन गया cos of
log x इंटू log x का इंटू 1/x। तो इसको जब हम फाइनल स्टेप में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारा dy by dx इक्वल्स टू cos ऑफ log x अपॉन dx tan x। सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर tan x। Another composite function. Again, y is function of x. So we differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore, dy by dx equals to derivative of e to the power f is e to the power tan x into ddx of फिर से डेरिवेटिव क्या करना है हमको tan x का। फिर से हमको डेरिवेटिव लेना है tan x का। तो आंसर e टू द पावर tan x into sec square dx। This is the derivative log of x to the power 5 plus 4. Let y equals to log of x to the power 5 plus 4. Again, y is differentiation of x, so differentiate with respect to x. Therefore, dy by dx equals to derivative of log is 1 upon x to the power 5 plus 4. फिर से डेरिवेटिव ले लिया हमने ddx of x to the power 5 plus 4 equals to, अब यहाँ पर x to the power 5 plus 4 का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो डेरिवेटिव लिखने के पहले x to the power 5 का डेरिवेटिव 5x to the power 4 plus 4, डेरिवेटिव ऑफ 4 is 0, derivative of constant is 0, so derivative of 4 is 0. We don't need to write it. So 5 to the power 5x to the power 4 upon x to the power 5 plus 4 is our derivative. So this is all about the derivative of composite function. Next lecture will start with the first exercise of this chapter.